Hello friends, welcome to Stock Market Pulse. I am Nitika and I have come up with some my budget picks for the budget 2023-24. Yes, I have got some good stock which is related to those sectors where government can give you some good news or can allocate some good funds in budget 2023. So you can keep these stocks on your radar for the budget purpose. So stay connected till then and find out the name of those stocks. So hit the like button now only and stay connected till the end to know all the names of stocks. First, I will discuss the sector, which sector can be important for the budget. Actually, in this budget, there are high expectations that the government will continue to focus on allocating more funds in infrastructure space. So, and that would help to grow the sectors like auto, FMCG, cement, consumer durables, and one more railways also. So, my first pick is yes, my first pick is Dabur. Dabur is actually related to FMCG sector. That with the government's focus on improving the rural sentiment, we can expect the increase in budgetary allocation under the Manrega, and this would support the growth for rural centric companies, and Dabur is rural centric company. You might be knowing that 50% of the Dabur revenue comes from the rural India. So Dabur can be benefited with this boost, and the rural demand would add the company's growth. So now we'll discuss the technicals. So Dabur is trading at 560 somewhere, और डाबर का एक अच्छा गुड सपोर्ट है 555 यहाँ पे 555 टू 545 से हियर 555 से 545 तक एक अच्छा बाइंग जोन स्ट्रॉन्ग जोन है. अभी तो इट इज ट्रेडिंग एट 563 ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, बट इट लुक्स लाइक इट विल कम टू हियर 558 टू 555 पे भी आ सकता है. और एक 545 का भी अच्छा सपोर्ट है हियर. तो 545 टू 555 के बीच यू कैन बाय दिस स्टॉक फॉर द बजट पर्पस. the टारगेट कैन बी यस 600 प्लस 600 तो हो ही सकता है. तो 600 एक तक ये जा सकता है, एंड यू कैन बाय दिस स्टॉक हियर 555 टू 560 टू 555 के बीच में. So my second pick is Finolex cables. Yes, this company manufactures the cables with equipment used in 5G and all. So and this is small cap company. So expansion of the PLI scheme to manufacturing of 5G equipment through various rural schemes like जैसे मनरेगा है and all. So it would actually benefit the Finolex cable. So इसका now we'll discuss the technical level. uh, this Finolex cable is actually trading at 543. तो 543 पे ये ट्रेड कर रहा है. तो इसका एक अच्छा बाइंग जोन, एक अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे 543 के आसपास ही, 540 के आसपास, 540 के आसपास अ गुड सपोर्ट फॉर दिस स्टॉक. इट शुड नॉट फॉल फ्रॉम हेयर. अगर यहाँ से फॉल करता है तो अच्छा खासा गिर सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है. सो 540 पे एक अच्छा बाइंग जोन है फॉर द. इट शुड नॉट फॉल, बट कीप इन योर माइंड शुड नॉट फॉल फ्रॉम हेयर. सो 542 एक 580 के टारगेट के लिए वी कैन गो फॉर ट्रेडिंग. ओके, सो बाय 542 580 का एक टारगेट हो सकता है फॉर द फिनोलेक्स केबल फॉर बजट पर्पस. So now my third pick. Yes, this is from railway. This is Aircon International. Yes, government can give some good fund for the improvement of the infrastructure of the railways. So government has a strong focus on the railway electrification, and Aircon International can be the best player in this. And you might be knowing the dividend yield it gives, it is 4.7%. What a good dividend this company is giving, 4.7%. So this can be
good budget picks for the budget. I will discuss the technical level for you. It is trading at 58, and this is actually the exact buying price for the 58. It is taking support here, so you can buy it here, but keep in your mind it should not fall from here. If it's falling from here again, then it will fall more. It can come till here also, here. So यहाँ से गिरने के बाद ये ज़्यादा गिर सकता है, so it should reverse from here. So it should take a reversal from here for the target of 65. So you can buy it here, here it at support 58 for the target of 65. For the trading purpose, for the budget purpose, you can buy this stock. But yes, it should not fall from here, should not break this support. Now my fourth pick. Yes, ITC is the fourth stock, and it's again from FMCG sector. सो आईटीसी, यू माइट बी नोइंग दैट आईटीसी का मेन जो सेगमेंट है बिजनेस का, वो है टोबैको. दे मैन्युफैक्चर द सिगरेट्स. सो अक्सर गवर्नमेंट सिगरेट्स पे बहुत टैक्स लगाती रहती है, तो दिस इससे उनको थोड़ा सा नुकसान होता है. बट दिस वी कैन एक्सपेक्ट अ मॉडरेट टैक्स सिनेरियो फॉर द सिगरेट्स इन दिस बजट. एंड इससे क्या होगा कि द कंपनी इज इम्प्रूविंग मार्जिन प्रोफाइल. सो एक अच्छा आईटीसी के लिए अच्छा, अगर मॉडरेट टैक्स लगता है तो इट इज एक्चुअली गुड फॉर आईटीसी. और एक वन मोर न्यूज इज कमिंग फ्रॉम द आईटीसी विच इज डीमर्जर ऑफ द कंपनी. सो नाउ वी कैन डिस्कस द टेक्निकल लेवल. आईटीसी ट्रेडिंग एट 330 340 समवेयर. सो 340 के आसपास आईटीसी ट्रेड कर रहा है, और इसका एक गुड सपोर्ट है 332. यहाँ पे 332 325, यहाँ से लेके 325 टू 330 के आसपास एक गुड सपोर्ट है आईटीसी का. बट इट इज स्टिल ट्रेडिंग अबव हायर देन इट्स सपोर्ट जोन. तो हो सकता है ये थोड़ा सा गिर के यहाँ तक आए, यहाँ पे कहीं, या 330 तक आए. सो वी कैन बाय इट हियर, और हेयर ऑल्सो यू कैन बाई इट हेयर ऑल्सो. बट एक 325 से यहाँ से 330 का एक अच्छा बाइंग जोन है फॉर द टारगेट ऑफ 355. सो दिस इज ऑल्सो ट्रेडिंग आइडिया, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए है. सो अगर अच्छा गुड न्यूज़ आती है आईटीसी में, तो इट कैन गो अप टिल 355 के आसपास कहीं. सो 330 25 to 330 35 एक बाइंग जोन फॉर द आईटीसी फॉर द टारगेट ऑफ 355. So now my fifth stock, which is from the sector defense sector. Yes, defense sector से ये stock है, and the name of the stock is HAL. Why defense sector? Because government always give more attention to defense sector and to improve it. So HAL can be one pick from the defense sector, और भी sector हो सकते हैं, railways and infrastructure also, which I have discussed earlier also. But defense sector is also one more sector which can be benefited with the budget. So we can expect an increase in the budgetary allocation for the defense sector, and the HAL can be one of the good player in the defense sector. So we can discuss the buying level also. It is trading at 2500 के आसपास it is trading, और 2500 के पास ही इसका एक अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे. तो 2500 is a good support for the HL, and it is trading near 2500. And 2450 से लेके 2450 to 2500 can be a good buying zone for the HL for the target of 2800. Yes, but it should not fall more than 2400. 24 के 100 के नीचे इसको नहीं जाना चाहिए. So 2450 से 2500 के बीच में you can accumulate this stock for the budget purpose, for the short term purpose, and the target is 2800. So
These are some few, these are some stock which I picked for the budget, but there are more stock. I can't discuss all the stocks. There are so many stocks related to the budget. जैसे एक renewable energy भी हो सकता है, where you can pick the stock Tata Power, and fertilizer sector. The stock can be Chambal Fertilizer, GNFC. So many stock and sector is there for in which they actually they get benefited with the budget. So I cannot discuss all the stocks and sector. So you can study these sectors and stocks also. I will come up with the Q3 result series with the stock which is posting good Q3 results, and this series is going on. So keep watching my video and liking and sharing it. And once again, all of you, a very happy Republic Day and happy Basant Panchami, and signing off.